Ay, ay. Whip slinging all around Manhattan. Tony Stark, what's happening? Got a new suit in styling, so go and get to snapping. I post it for you, players, post it for you. Do a flip then drop. Some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So the vocabulary is here, the difficult words, desire. A strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. And the next word is favor, approval or support. ये डिज़ायर इनका मतलब है कि किसी को कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये चाहिए मुझे, सो इच्छा कहते हैं उनको. और फेवर मीन्स सपोर्ट करते हैं. सो जो काम हम इस चीज़ें पर हम सपोर्ट करते हैं वही हम फेवर कहते हैं. सो यही है दो वोकैबुलरीज यहाँ का डिफ़िकल्ट. ஸோ டிசைர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங், அதாவது பேராசை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவர் அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணுறது. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த போயமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம். We can see the explanation of the poem. The poem expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire. One group is of the opinion that someday the Earth's core will get so heated up that it would lead to fire, destroying the Earth's surface. On the other hand, the second group says that if the temperature goes down to an extent that makes life on Earth impossible, it would have the same catastrophic effect. The poet then compares fire and ice with the destructive features of human emotions, desire and hatred. He says that from what he is aware about fiery desires, he would favor the ones who say it would be fire. By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them, and the consequence of unmonitored longing is chaos. हमारा आदर यहाँ पर दो चीज़ें बता रहे हैं कि ये दुनिया फायर और आइस इन दोनों में से ही ख़त्म हो जाएगा. ऐसे इधर हमारा दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगा और आइस बढ़कर ख़त्म हो जाएगा. सो ये अभी ये इस दोनों चीज़ों को हमारा ह्यूमन का इमोशन से कंपेयर कर रहा है कि ह्यूमन एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, मीन्स हेट्रेड, और उनका इच्छा तो थोड़ा ज़्यादा है. सो इधर हमारा दुनिया ह्यूमन का इच्छा से ख़त्म हो जाएगा और ह्यूमन का हेट्रेड, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, ये रीज़न से हमारा दुनिया ख़त्म हो जाएगा. सो अभी फर्स्ट लाइन में फायर को बोला था और सेकेंड लाइन में आइस को बोला था. वो ये दोनों चीज़ों को ह्यूमन का इमोशन से ये कंपेयर कर ये दुनिया ख़त्म हो जाएगा ऐसे बोल रहे हैं. और हमारा आदर जिसके साथ में है कि जो फायर से ख़त्म हो रहा है, जो बोलते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि फायर से ही ख़त्म होएगा, सो हमारा आदर भी उनके साथ है कि वो भी उनको सपोर्ट करते हैं कि यस हमारा दुनिया फायर से ही ख़त्म होगा. क्योंकि इनका मतलब है कि हमारा दुनिया इच्छा से ही ख़त्म हो जाएगा. எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன் தமிழ். இப்போ நம்ம ஆதர் ரெண்டு விஷயத்த சொல்கிறாரு. எய்தர் இந்த உலகம் தீயால் அழிஞ்சிரும் இல்லைன்னா ஐஸால் அழிஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு. திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே ஹியூமனுடைய இமோஷன்ஸில் கொண்டு அவர் கம்பேர் பண்ணுறாரு. மனிதனுடைய பேராசையினால் அழியும், அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை வெறுப்பதால் அழியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயத்தையும் இயற்கையினுடைய விஷயத்துக்கு கூட இவர் கம்பேர் பண்ணிக்கிறாரு. இதுதான் இந்த 4 லைனில் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லைன்ஸ். But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. So here the difficult words are the perish and the suffice. And the meaning for the perish is die and for the suffice is be sufficient. Here the author explains that then by not waiving of the first option of fire, he considers if the world has to expire twice, ice would be equally competent in ending it. He brings about a contrast between ice and hatred. The human capability of insensitivity and hatred has the potential for inner destruction. Though slow and steady, it has the same effect that desire has on us. So if given an option between fire and ice would be just as good as fire to destroy the world. हमारा आदर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा दुनिया अगर दोबारा मर जाते हैं, सो फायर यानी आग से इक्वली कॉम्पिटेट करने के लिए ये आइस ही काफ़ी बेहतर है ऐसे बोल रहे हैं. और क्या बोल रहे हैं कि
और वही इनफ, वही काफ़ी इनफ है. सो यहाँ पर वेकाबुलरी को देखिए. पेरिश का मतलब है डाइम यानी मर जाना, और सफिस का मतलब है बी सफिशिएंट. ओके, बस हमें इतनी ही चाहिए ऐसे. सो ये कहते हैं कि नफरत से ही ये दुनिया दोबारा ख़त्म होने वाली है, यानी कि आइस ही कॉम्पिटेट इक्वली कर सकते हैं आग से, यानी ह्यूमन का इच्छा से, मीन्स ग्रीडीनेस से ये नफरत ही इक्वल कर सकते हैं. सो ह्यूमन का हैट्रेड ही एक कारण होगा कि ये दुनिया ख़त्म होने के लिए. ஸோ நவ் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன் தமிழ். இப்போ அந்த நம்ம ஆதர் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டாவதாக நம்ம உலகம் இந்த அழிய போகுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மனிதனுடைய வெறுப்புனால தான் அழிய போகுது. அதாவது இந்த தீயினால் அழியதுக்கு ஈக்குவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்னால் அழியது தான் அதுக்கு காம்படிட் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும். மனுஷன் பேராசைப்படுறது மட்டும் இல்லை, அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது எது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மனிதன் மேலே அவன் காட்டக்கூடிய வெறுப்பு. Okay, now let's enter into the literary devices of the poem. The rhyming scheme mentioned here is A, B, C and A, C, B. And here the next literary device is assonance. It is a repetition of the same sound. Example, the long sound of O in I hold with those who favor fire. Here the letter O is repeated and the sound of O is repeated in these two lines. Imagery is used to make readers perceive things involving their five senses. Example, some say the world will end in fire. So it's an imagination of the poet that it is not real, but it's an assume. Anaphora, the repetition of a word or expression at the start of two or more consecutive lines. Example, some say is repeated in line 1 and 2. So the repetition of the words can be termed as anaphora. Yes, thank you viewers. By here we are completing the poem The Fire and Ice. So bye. We will meet you in the next session and the next poem. Please subscribe and support the channel. This is Suryan Academy. Thank you. Web slinging all around me.